So welcome students. Now in this part of the video, we're going to learn how to do an compulsory question of 6 markers in every board exam of 10th standard ICSE board. Okay. So in every ICSE 10th standard board examination, there is one 6 marker question called as an OGIVE. Okay. Now what is this OGIVE is and why we have to draw this OGIVE and what we're going to get from this OGIVE. I'll tell you each and every small and minute detail in this part of the video. Okay, so let's read the question. Attempt this question on the graph paper. We compulsory रहेगा, you'll have to do it on the graph paper. The table shows the distribution of the daily wages earned by 160 workers in the building site. So wages in rupees per day is given as say 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, so until 80. And the number of workers is 0 to 10 earned by 12 people, 10 to 20 rupees per day earned by 20 people, and so on. Using the scale of 2 centimeters to represent 10 rupees and 2 centimeter to represent 20 workers, plot these values, draw smooth ogive through the points and estimates from this graph what is mean, what is, not mean, what is median, what is lower quartile, what is upper quartile, and maybe there would be 1 or 2 questions. Let's see if there is any other question on this. Estimate from these few questions, okay? uh, at least we're going to see how to find the median, lower quartile, and upper quartile. So now, when we have to do these questions, first of all, we'll prepare the table. And in table में क्या क्या आना चाहिए? CI, that is class interval. यहाँ पर है wages in rupees per day. Okay, so 0 to 10, 10 to 20, we're going to write it down till 80. I hope you understood this table. Don't worry, I'll slowly, gradually explain the entire table, how nicely we can prepare this. So पहले wages rupees per day लिखा. Then number of workers. What was the number of workers? So 0 to 10, there were 12 people. 10 to 20, there were 20 people. 20 to 30, there were 30 people, and so on. So I hope you understood this number of workers, which is nothing but frequency. ये column का नाम रहेगा CI. CI stand for class interval. Okay, not compound interest. Okay, number of workers stand for frequency. F stand for frequency. And now the next column is called as cumulative frequency. Now cumulative frequency hota kya hai? Cumulative frequency is basically, we have already learned in many videos, or in last entire so many part of the videos, we have already learned what is cumulative frequency. But अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो no worries, I'll teach you right now also once again. Okay, तो पहले ये 12 को कॉपी कर दीजिए. 12 plus 20 कितना बनेगा बच्चों? 12 plus 20 32. 32 plus 30 कितना बनेगा बच्चों? 62. 62 plus 38 कितना बनेगा? 100. 100 plus 24 124 plus 16 140 plus 12 152 plus 8 160. Isn't it diverse 160 people or 160 workers? Yes. So ये कंपलसरी होता है CF लिख देना. आर यू गेटिंग इट? या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना कंपलसरी होगा ओजाइव के लिए. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? आई होप नो. ओके, चलो इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग पॉइंट्स डिसाइड करके ले लेंगे. अब पॉइंट देखो, जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर भी ए पॉइंट लगाया है. थोड़ी देर के बाद मैं समझा देता वो ए पॉइंट क्या है. ABCDEFGHI आई तक हम लोग यहाँ पर सभी पॉइंट लिख देंगे. अब ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या है? Those are the coordinates which we'll have to suppose to plot on the graph paper. So now how to plot the points? See, look at this. ये 10, 12 would be our second point. So what is our first point? 10, 12 is our second point. Then first point would be 0, 0. Are you getting it? First point would be 0, 0. So suppose अगर ये graph चालू हुआ होता था, like if it would have been 6,000 to 7,000, then our first point would have been 6,000, 0. Are you understanding? I just give an example. Suppose ये होता था 600 to 700. So हमारा first point होता था 600. जो lower quartile होता है, 0 would be our first point or first vertex on the graph paper. I hope you understood point A 0, 0 क्यों होता है? Okay, 10, 12 would be our second point. Then 20. देखो ये जो upper class limit है, 10, 12 and cumulative frequency. Upper class limit is x coordinate. यहाँ पर dash नहीं होना चाहिए, by the way. यहाँ पर comma होना चाहिए. Okay, यहाँ पर comma होना चाहिए because they are the coordinate. This is an what we call an order pair. X coordinate, y coordinate. I hope you understood. यहाँ पर क्या है? Upper quartile. I mean, sorry, not upper quartile. Upper class limit. Upper class limit क्या है? 20. यहाँ पर cumulative frequency क्या है? 32. So 20,
32. 20 comma 32. I hope you all are understanding. Okay, next 30 comma 62. नेक्स्ट क्या है 40, देखो यहाँ पर अपर क्लास लिमिट 40 है कमा 100, सो 40 कमा 100. नेक्स्ट क्या है 50 कमा 124. समझ में आ रहा है बच्चों 50 कमा 124. इफ यू हैव अंडरस्टूड please start preparing this table quickly in your book. Hurry up, hurry up. 60 comma 140. Now I'll tell you everything in detail. 60 comma 140, then 70 comma 152, 70 comma 152. Please verify your all the points has to be there. Okay, तो यहाँ पर अगर एक भी स्मॉल एरर हो जाते हैं हमारे 6 मार्क्स ऑन टॉस चले जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ये जो पूरा टेबल है इसमें ये कोऑर्डिनेट्स एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स ये जो पॉइंट्स है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस सी आई एंड दिस फ्रीक्वेंसी इफ एवरीथिंग इज करेक्ट यहाँ पर जो एडिशन हुआ है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑल इफ एवरीथिंग इज करेक्ट then you get 1 full marks out of that 6. 1 marks you grabbed. Are you getting it? Now let's move ahead and then let's grab next 2 marks. अब ये जो next 2 marks है that you achieve when you completely finish drawing your graph. So graph is going to look something like this. I hope you all can see the graph on one page. Okay, many people are saying no. Okay, one moment. I'll just show you the complete graph on one piece of paper. तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको देखो I'm just taking this graph little up and little zooming it. 1 second, hold on. Okay, now we want say look at this. If you've seen your graph paper, so जिसकी bottom most line रहेगी वहां पर हम लोग x एक्सिस ड्रॉ करेंगे वहां पर लिखेंगे x एक्सिस. ये जो फर्स्ट लाइन रहेगी ये ग्राफ पे वहां पर हम लोग y एक्सिस ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन y एक्सिस वहां पर लिखेंगे y एक्सिस. ये y एक्सिस ये लिखना एंड यहाँ पर x एक्सिस लिखना कंपलसरी होगा. ओके I hope everyone finished writing this y axis and x axis. Okay, once you are done with this y axis and x axis यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये क्या थे on the x axis there were wages rupees per days, wages rupees per days, and यहाँ पर क्या है these are number of workers going in the upward direction on the y axis. You understood? So पहले x axis draw करो, y axis draw करो, उनको name करो एंड देन यहाँ पर उनकी क्वांटिटी क्या है यहाँ पर उनकी क्वांटिटी क्या है वो लिख दो. फिर यहाँ पर स्केल लिख दीजिए. स्केल क्या रहेगा ऑन द एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 rupees. 2 centimeters equal to 10 rupees per day. Okay, that's the and that's how you're going to plot the numbers like 2 centimeter पे 10 20 30 40 50 60 70 80 प्लॉट हो गया रहेगा. आई होप यू हैव फिनिश्ड दिस. यहाँ पर आपने स्केल लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 rupees. Now on the y axis we want 160 workers. So हम लोग क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर पे 10 workers, another 2 सेंटीमीटर पे 20 and another 2 सेंटीमीटर पे and so on. So 2 centimeters is equal to 20 workers. I hope you understood till here. Okay, 2 centimeters is equal to 20 workers. I hope you understood this. Now scale लिखे हो गया है. So अब तक हमने क्या क्या फिनिश किया x axis लिखा, y axis लिखा, x axis की क्वांटिटी लिखी, y axis की क्वांटिटी लिखी है. फिर वेरी इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर अगर आपको एरो दिखाई दे रहा है तो देखो ये एरो दिख रहा है इट्स गोइंग इन द राइट हैंड साइड एंड इफ यू सीन दिस arrow on the y axis दिख रहा है यहाँ पर देखो arrow is going upward. Could you see the arrow is going upward? So यहाँ पर ऐसे arrow ड्रॉ करेंगे फिर स्केल लिखेंगे. So ये 6 चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंटली खत्म हो जाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट plotting the points. Now which points I am talking? I'm talking the points A to I. A to I correctly plot करने हैं. Say 0,0 means 0,0 only. 10,12 म्हणजे 10 on the x axis and 12 on the y axis. So वहां पर 12 की जगह पर अगर किसी ने 11 प्लॉट कर दिया 6 मार्क्स गए मतलब आउट. Are you getting it? So please plot your points very accurately, students, very accurately. Okay, so I hope you have started plotting it. 0,0, 10, 12, 20, okay, what was that? 20, I guess it was 20, no, 1 second, let's check that.
20,32, 30,62 बहुत अच्छे से प्लॉट कर दीजिए। जैसे जैसे ये आपने ये पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं, you're going to get something like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर लिख दो यहाँ पर A B C D E F G H and I, and now it's time to join them with the free hand over here like this with the pencil। आपको यहाँ पर रूलर फ्रेंच कर्व्स कुछ नहीं यूज करना है, सिंपली फ्री हैंड से ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, आई होप एवरीवन आर डूइंग इट। Come on, come on, come on, come on, do it quickly along with me. Once you join these all A to I points, hip hip hooray, 2 marks are in your pocket. So ये ओजाइव ड्रॉ करने के लिए 1 mark मिलता है। ये स्केल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस, ये सब ड्रॉ करने के लिए 2nd mark मिलता है। So by now we've grabbed 3 marks, 1 for table and 2 for drawing this nice smooth curve. Nice smooth curve, and this nice and smooth curve is called as an ogive. ये particular graph is called as, this particular graph is called as an ogive. I hope you all have done by now this, isn't it? And now students, it's time to solve few questions based on them. Okay, now let me teach you how to calculate the median and how to calculate the lower quartile and all that thing. So let's move to this question. So सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, द मीडियन वेज कैलकुलेट करना है। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर विल नॉट गोइंग टू यू डू दैट इवन एंड ऑड बिजनेस, विल गोइंग टू सिंपली डू मीडियन इज इक्वल टू n by 2 टर्म। सो मीडियन वेजेस क्या है, n by 2 टर्म। n कितना था, 160 अपॉन 2 टर्म, 160 अपॉन 2 टर्म क्या बनेगा, 80th टर्म। Now how and where you're going to see this 80th term, let me just teach you. Look at this, let's move on the graph. अगर आप ये ग्राफ पे जाते हैं 80 नंबर के पास जाएंगे ऑन द वाई एक्सिस। ओके, 80 से हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन विद द रूलर एंड पेंसिल ड्रॉ करेंगे टिल द ओजाइव एग्जैक्टली। ओके, एंड वहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन आर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर। नाउ ये जो वैल्यू रहेगी दैट वुड बी योर आंसर फॉर द मीडियन। नाउ इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर देखो, ये इसको बोलते हैं एरो मार्क। देखो ये एरो कहां से कहां पर जा रहा है, देखो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस till the ogive, and from ogive it's going downward. So the arrows, look at this, could you see the arrow diagram? This arrow diagram is very important student, and then अगर ये arrow रहेंगे तो ही आपको full marks मिलेंगे। देखो यहाँ पर median लिखा होना जरूरी है, some people can write Q2 also, so median in bracket Q2। अब इनका आंसर क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस पे आपको मिल गए मेरे ख्याल से सम वैल्यू बिटवीन 30 एंड 40, आई गेस 35 रुपीज और समथिंग लाइक दैट। लेट्स चेक दैट आउट, व्हाट इज इट, इट इज 35 रुपीज। ओके, यहाँ पर रुपीज लिखा होना मैंडेटरी है, वरना वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। आर यू गेटिंग इट? सो रुपीज 35 लिखा होना जरूरी है। आई होप यू फिनिश टिल हियर। ओके, नाउ ₹35 के बाद क्या करेंगे? ओके, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। सो अपर क्वार्टाइल के पहले लोअर क्वार्टाइल देखते हैं। लोअर क्वार्टाइल क्या है बच्चों, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला रहेगा n by 4th टर्म। n by 4th क्या रहेगा, 160 अपॉन 4th टर्म। 160 अपॉन 4th टर्म क्या रहेगा बच्चों, 40th टर्म। नाउ सेम चीज ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग 40th टर्म पे चले जाएंगे ऑन, 1 सेकंड, आई विल डू सम, ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन ग्राफ पे चले जाएंगे, वहां पर 40th टर्म के पास जाएंगे ऑन द वाई एक्सिस, वहां से लोअर क्वार्टाइल लिख के ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ लाइन खींचेंगे, कहां तक, ये ओजाइव तक एग्जैक्टली। वहां से एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये एरो लगा देंगे, और जो भी ये आंसर है दैट इज 22.5 रुपीज, वो है हमारा लोअर क्वार्टाइल आंसर। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड इट टिल हियर। Isn't it nice and simple and very simple, sir? Cool. Many people are saying very simple, sir. Yes. ओके, सो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होता है तो आपके 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स ऑन टॉस चले जाते हैं। आई गेटिंग इट? सो आपका आंसर की एक्यूरेटी
like your answers accuracy is very very important, and that is completely based on your plotting of these numbers. If you have plotted this number accurately, you will get absolutely accurate answer the way the examiner has got. Now people say, sir, my OJ was like this, my OJ was tilted, my OJ was not correct. That's not the case, student. If you will practice this 10 to 15 sums of OJ, I guarantee you that you will going to get 6 on 6 marks of this OJ. So are you all ready? So I hope you finish the lower quartile, and the same with the upper quartile you can do that. 3n upon fourth term, that is 3 into 160 upon 4, so that will become 120th term. And now 120 से हम लोग on y axis से horizontal line draw करेंगे ओजाई तक, and ओजाई से vertically axis मतलब vertically on the x axis projection ले लेंगे, and that would be your answer. I guess it's something at 47.5, and that's your answer for rupees 47.5 for the upper quartile, 47.5 rupees. And now अगर यहाँ पर कोई मुझे पूछता है, sir, calculate this inter quartile, so what is to be done, student? I hope everyone knows by now. Inter quartile range का formula क्या रहेगा, student? Inter quartile would be upper quartile minus lower quartile, मतलब 47.5 minus 22.5. That would be your inter quartile range. Are you getting it? So that all questions can be asked. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो, अगर ये 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क आपको यूं ही मिल जाएंगे। कभी कभी वो लोग इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि I'll just give you one example over here. Say they may ask, okay, find the number of people or the number of workers who earn more than 70 rupees. तो हम लोग क्या करेंगे, 70 से यहाँ पर वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर मोर देन 65 रुपीज। मोर देन 70 तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ओके, बट मोर देन 65 रुपीज, तो मोर देन 65 के पास यहाँ पर आ जाएंगे। एंड फिर यहाँ से देखो, फिर इन दैट केस इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ वर्कर्स, आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द wages onwards. Are you getting it? Because the condition of wages is given. Condition of wages was the number of people who earn more than rupees 65. So 65 से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ओजाइव तक, एंड वहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे y axis तक. Okay, so x axis to ogive and ogive to y axis, and then whatever the answer we're going to get over here, that would be the number of people. Okay, 160 minus that many number of people will be earning more than 65 rupees per day. I hope student you understood this. Isn't it very simple concept? Was subtract q 160 say, I hope everyone have understood, because this patch of the people will going to earn more than 65 rupees a day, isn't it? And that's it, student. Isn't it very very simple? So big thumbs up. I hope you have liked this. If you have liked it, then do press that like button as well. Okay, I hope you enjoyed learning along with me this mean, median, mode, and the entire chapter. Don't worry, students. Stay tuned. We'll be doing many more sums based on this. And again, I'll repeat, students. Like you will have to do 10 to 15 sums based on this OJ. Then only you'll be able to grab 6 on 6 marks. And very important thing now, please pause this video, complete this sum, and then only move ahead with the next sum. So